Question 1. The anther wall layer that nourish the developing pollen grain is epidermis, endothecium, middle layer, tapetum. Correct answer is option D. Tapetum is the innermost nutritive layer of anther wall. Question 2. In angiosperms, microsporogenesis results in the formation of microspores, pollen grains, male gametes, generative cell. Correct answer is option A. Microspores. Question 3. Pollen grains are shed at which stage in most angiosperms? One cell stage, two cell stage, three cell stage, or four cell stage? Correct answer is option B. Two-celled stage. Question 4. Which of the following exhibits perisperm? Pea, groundnut, black pepper, bean. Correct answer is option C. Black pepper. Question 5. The function of filiform operators in synergids is to protect the egg cell, guide the pollen tube into synergid, or nourish the embryo, store the food reserve. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स एक तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि प्रेजेंट है सिनर्जिड के अंदर और ये सिक्रीट करते हैं कीमोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं. Question 6. Double fertilization involve fusion of two male gametes with two eggs, fusion of one male gamete with egg and other with secondary nucleus, fusion of two male gametes with secondary nucleus, fusion of egg with secondary nucleus. Correct answer is option B. Questions sorry. Question 7. The polarity level of the cells of aleurone layer in maize is haploid, diploid, triploid, polyploid. Correct answer is option C. Triploid layer present होती है because aleurone layer is the part of endosperm. Question 8. Geitonogamy is cross-pollination between flowers of different plants, pollination between flowers of the same plant, or self-pollination within the same flower, or vent pollination. Correct answer is option B. Pollination between the flowers of the same plant is known as geitonogamy. Question 9. Which plant shows cleistogamy? Sunflower, viola, both A and B, maize. Correct answer is option C. सनफ्लावर और वियोला दोनों जो है वो क्लिस्टोगेमी शो करते हैं जिसमें जो फ्लावर्स हैं वो कभी भी ओपन नहीं होते. Question 10. The most common type of ovule in angiosperms is anatropous, arthotropous, campylotropous, or amphitropous. Correct answer is option A. Anatropous type of ovule is present in angiosperms. Question 11. From which cell does the pollen tube arise? Generative cell, vegetative cell, microspore mother cell, male gametes. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब अराइज होती है. क्वेश्चन 12. Number of meiotic divisions required to produce 100 seeds in a typical angiosperm? 100, 125, 150 or 200? Correct answer is option B. 125. Question 13. Pollen kit is generally found in entomophilous flowers, anemophilous flower, hydrophilous flower, or clistogamous flower. Correct answer is option A. Entomophilous flower. Question 14. Which of these is a xenogamous flower? Bisexual flower, unisexual flower on dioecious plant, unisexual flower on monoecious plant, or closed flower? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो कि डायोशियस प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं दैट आर
जीनोगैमस फ्लावर। और जीनोगैमस एक तरह की क्रॉस पोलिनेशन है बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स। Question 15. The female gametophyte in angiosperm is also called archegonium, embryo sac, megaspore, ovule. Correct answer is का option B, embryo sac. Question 16. In a typical embryo sac, the cells that degenerate after fertilization are egg and synergid, synergid and antipodal cell, antipodal and central cell, egg and central cell. करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल्स डी जनरेट होते हैं वो हैं सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स। क्वेश्चन 17. एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन पिया, मेज, कोकोनट, कैस्टर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पी प्लांट जो है इसके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। Question 18. Pollination in water hyacinth and water lily occurs by water, wind, insect, birds. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी कि जो वाटर हाइकंथ और वाटर लिली हैं इनमें पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। Question 19. Pollen grain of which plant causes allergies? Rose, parthenium, sunflower, hibiscus. Correct answer is option B. Parthenium, which is a carrot grass. Its pollen are very common allergen जो कि cause करते हैं hay fever and asthma and other type of allergies. Question 20. Embryo sac development from a single megaspore is called monosporic, bisporic, tetrasporic, apomictic. Correct answer जो है वो इसका option A, monosporic. Question 21. In many grasses, pollen tube enter the embryo sac through micropyle, chalaza, integuments, funicle. करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी कि ग्रासेस के अंदर जो पोलन ट्यूब एम्ब्रियो के अंदर इंटर एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर होती है वो होती है थ्रू चलाजा। और चलाजा जो है वो एक तरह की स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री में हेल्प करती है। Question 22. The cells of which layer of anther wall are fibrous and help in dehiscence? Epidermis, endothelium, tapetum, middle layer. Correct answer is option B, endothelium layer. 24. In which plant is the male gametophyte reduced to only two cells? Lily, orchid, wheat, rice. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्चिड्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो टू सेल्ड होते हैं और इसके अंदर जो मेल गमेटोफाइट है वो टू सेल्ड पोलन ग्रेन्स पर कंसिस्ट होती है। Question 25. The protective cover around the radicle in monocot seed is called testa, tegmen, coleorhiza or coleoptile. Correct answer is option C. Coleorhiza is the protective covering around the radicle जबकि coleoptile जो है ये covering है plumule की। Question 26. The function of suspensor in embryo development is photosynthesis, pushing embryo into endosperm, protection, storage. Correct answer is option B. Suspensor cells जो है वो एम्ब्रियो को पुश करते हैं इनटू द एंडोस्पर्म। Question 27. Which of these is not a part of seed? Seed coat, embryo, fruit wall, endosperm. Correct answer is option C. Fruit is not a part of seed. Question 28. An example of a seed with residual endosperm is pea, castor, bean, groundnut. Correct answer is option B. Castor seed is endosporic, spermic. Question 29. Pollination by bats is called ornithophily, chiropterophily, entomophily, malacophily. Correct answer is option B.
बैट्स जो कि आर्डर कायरोप्टेरा से बिलोंग करता है, तो इसके थ्रू जो पोलिनेशन है उसका नाम है कायरोप्टेरोफाइली। Question 30. Which chemical is used for artificial induction of polyembryony? IAA, GA3, 2,4-D, kinetin. Correct answer is इसका option C. 2,4-D एक एनालॉग है ऑक्सिन का and it can induce polyembryony experimentally or artificially. Question 31. Incompatibility in pollen-pistil interaction is due to pollen not germinating, biochemical barrier, mechanical barrier, all of the above. Correct answer is option B. पोलन पिस्टल इनकम्पैटिबिलिटी बायोकेमिकल बैरियर्स की वजह से होता है और ये एक तरह की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आप इसको कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ वन काइंड ऑफ अ जेनेटिक कंट्रोल which prevent the self pollen tube growth. Question 32. The part of the pistil that receive pollen is stigma, style, ovary, placenta. Correct answer is option A, stigma. Question 33. Polyembryony is common in pea, tomato, citrus, maize. Correct answer is option C. Citrus, mango, onion ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर पोली एम्ब्रियनी होती है मींस मल्टीपल एम्ब्रियोज आर प्रेजेंट इन अ सिंगल सीड. Question 34. Phenomenon of formation of seeds without fertilization is called apomixis, parthenocarpy, polyembryony, apospory. Correct answer is option A. Apomixis is the formation of seed without fertilization. Question 35. Which plant shows hydrophily? Lotus, Vallisneria, water lily, hydrilla. करेक्ट आंसर जो है वो इसका ऑप्शन बी वेलेस्नेरिया इज पोलिनेटेड अंडर वाटर सो इससे इसका नाम है हाइड्रोफिली. Question 36. The outermost layer of anther wall is epidermis, endothelium, tapetum, middle layer. Correct answer is का ऑप्शन ए outermost layer of anther wall is epidermis जबकि innermost layer का नाम है tapetum. Question 37. The nuclei in central cell of embryo sac are haploid, diploid, two haploid polar nuclei or triploid. Correct answer is का option C कि जो central cell का nuclei है उसमें दो haploid polar nuclei present होते हैं which fuse to form diploid secondary nucleus. Question 38. Number of chromosomes in the primary endosperm nucleus if n is equal to 10. 10, 20, 30, 40. Correct answer is option C, 30. Question 39. Which plant shows heterostyly to promote cross pollination? Maize, primula, papaya, cucumber. Correct answer is option B. Primula is a plant which shows heterostyle, which is the different style length to avoid self pollination और ये present है primula के अंदर. Question 40. Anemophilous flowers typically have large colored petals, nectar, light non-sticky pollens, scented flowers. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी कि एनिमोफिलस फ्लावर्स जो हैं वो लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी पोलन्स जो है उनके होते हैं. Question 41. What is the function of scutellum in maize green? Protection, photosynthesis, absorption of nutrients, gaseous exchange. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी कि जो स्क्योटिलम है ये मोनोकार्ड्स यानी मैस के अंदर एक कार्टिलेडन है और इसका काम है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द एंडोस्पर्म. Question 42. The haploid cell that divides to form the male gametes is microspore, generative cell, vegetative cell, tube cell. Correct answer is इसका option B.
जनरेटिव सेल्स जो है वो जब डिवाइड होते हैं तो उनसे दो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। Question 43. The ovule is attached to the placenta by hilum, funicle, micropyle, chalaza. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी कि फ्यूनिकल एक स्टाक है जो कि कनेक्ट करती है ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ। Question 44. Pollen viability is longest in rice, wheat, solanaceae, cereals. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी रोजेसी और सोलानेसी। ये दो ऐसी फैमिलीज हैं कि जिनके प्लांट्स के पास जो पोलन्स होते हैं वो ज़्यादा अरसे तक इवन मंथ्स तक जो है वो वाइबल रहते हैं। Question 45. The type of embryo sac development where all four megaspores take part is monosporic, bisporic, tetrasporic, apomictic. Correct answer is option C, tetrasporic. Question 46. Which is a dioecious plant? Cucumber, papaya, maize or coconut? करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी पपाया जो है एक डायोशियस प्लांट है। Question 47. Part of the seed that develops from the outer integument is testa, tegmen, perisperm, hilum. Correct answer is option A, testa. Question 48. The cells of the nocellus are haploid, diploid, triploid, polyploid. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी कि जो नोसिलस के सेल्स हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। नोसिलस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइटिक टिश्यू जो कि 2N होता है। Question 49. Which plant shows ovule that are curved and micropyle is near the funicle? Arthropus, Anatropus, Campylotropus or Amphitropus? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी एनाट्रोपस प्लांट के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो कार्व्ड होते हैं और माइक्रोपाइल उनका फ्यूनिकल की तरफ होता है। Question 50. Pollen grains are preserved as fossils because of cellulose fall, sporopollen, pollen, or pectin, lignin. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी स्पोरोपोलिन एक तरह का हाईली रेजिस्टेंट स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जो कि डिके को रेजिस्ट करता है एंड इट हेल्प इन पोलन फॉसिलाइजेशन।